So guys, everyone, now that is metals lecture 2. In lecture 1, let's be clear that we learned the properties of metals, we learned the alloys, we learned rusting of iron, and I told you that for iron to rust, oxygen and water both need to be present. If anyone is absent, rusting won't happen. And I told you that the oxide layers normally form on every metal, but we normally discuss about iron and aluminium. And I told you that the oxide layer on aluminium, called as Al2O3, is very sticky, it's non-porous, so aluminium stays intact inside. If I remove the oxide layer, aluminium shows up. Or in case of Fe2O3 over iron, called as rust, if I remove rust, right, so we see that the iron beneath it also has been rusted. Now, because the oxide layer of iron is actually porous and it's non-sticky. So guys, now today, let's move on. Firstly, let's see reactivity series for a while, right? So that you have a clear idea that when I talk about reactions and stuff, so you know what I'm talking about. So let's talk about reactivity of metals. I mean, the reactivity series, the famous. So when we discuss about reactivity series or reactivity of metals, so we are discussing that the metals undergo many similar chemical reactions. However, one metal may react more or less vigorously with a substance than any other metal, you can say. And the metal which reacts faster is said to be more reactive than the other metal. True? जिस तरह अगर मैं sodium add करूँ hydrochloric acid में, now that's a vigorous reaction. I mean vigorous. But if I add copper to a dilute acid, I see no reaction. This means that the sodium is much more reactive than copper. Now in this reactivity series, we have arranged these metals in order of decreasing reactivity, right? As we move down the series, the reactivity decreases. The element above is more reactive. The element below is less reactive. Shall we see? So guys, here's the reactivity series. It's potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, carbon, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum. Down the series, reactivity of metals decreases, because this our trend in reactivity shall allow you to explain the chemical reactions of all these metals. ठीक है, अब यहाँ पे basically carbon और hydrogen are like non-metals. आपने like हमने carbon क्यों add किया, I must tell you, because यही carbon जो है ये responsible होगा to explain you when I'll be explaining you that how these metals are extracted from the ores. तो यही आप कार्बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ठीक है, कि जहाँ पे हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर आपने किसी मेटल ऑक्साइड की ओर को रिड्यूस करना है, जो मैंने आपसे बात इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में भी मैंने वहाँ भी की थी, आपसे ने कहा था ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट और ये मेटल चैप्टर से लिंक करती है, मैं आज फिर बात कह रहा हूँ. ये सारे मेटल्स जो होते हैं, नॉर्मली ये सारे मेटल्स जो होते हैं ये अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में ओर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. अब ये कुछ एलिमेंट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, और हम कुछ जो मेटल्स को ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो आई मस्ट टेल यू अगेन, मैं बात फिर रिपीट कर देता हूँ, आई राइट इट एज वेल, कि रिमेंबर अगर हम बात करें द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, राइट, अगर हम इनकी बात करें कि दे एग्जिस्ट एज ऑक्साइड्स. So they exist, just a moment. So they exist as oxides in their ores. For example, aluminium exists as Al2O3. It's called as bauxite. या फिर alumina.
और अब आपने अगर इनके ऑक्साइड्स में से इन मेटल आयंस को रिड्यूस करना है और आपने एज मेटल बाइंड निकाला तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस यूज करना पड़ेगा. तो इट मींस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज यूज्ड. तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज द मेथड. तो ये मेथड है. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की जाएगी अगर आपने इनके ऑक्साइड में से इन मेटल्स को बाहर निकालना है. लेकिन जहाँ तक रही बात इन एलिमेंट्स जो गई ये कार्बन से नीचे हैं और हम बात करें अनटिल लेड, प्लीज़ इग्नोर हाइड्रोजन प्लीज़, ठीक है प्लीज़. और इसमें द कॉपर इज इंक्लूडेड, सॉरी, तो कॉपर इज इंक्लूडेड, ठीक है. अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें जब हम इनको हम निकालते हैं इनके भी ओर्स, आई मीन दे एग्जिस्ट एज oxides. For example, iron as Fe2O3. It's called as hematite. Right? अगर हमने इन मेटल आयंस को रिड्यूस करना है और इनको मेटल्स में बाहर निकालना है तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है. हम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो वी कैन यूज़ कॉमन reducing agents like carbon, carbon monoxide, hydrogen, etc. तो इनके लिए हम ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं. वी कैन. ओके, सो गेटिंग इट. सो आई रिपीट, फर्स्ट 5 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते हैं. हम इनको मेल्ट करेंगे ऑक्साइड्स को और हम यहाँ से मेटल्स बाहर निकाल लेंगे. लेकिन अगर हम बात करें इन मेटल्स की तो चूँकि ये लेस रिएक्टिव हैं, अगर आपने इनके ऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो भी सिंपल यूज रिड्यूसिंग एजेंट. इसलिए ये कार्बन यहाँ पे है. तो जो कार्बन है वो इसका मतलब है कि इनको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कार्बन जो है वो इनको रिड्यूस नहीं कर सकता फर्स्ट 5 एलिमेंट्स को, क्योंकि उनसे लेस रिएक्टिव है. सिंस कार्बन इज मोर रिएक्टिव दैन दीज 5 एलिमेंट्स यू कैन से, तो कार्बन को रिड्यूस कर सकता है. इसलिए फर्स्ट 5 एलिमेंट्स के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करनी पड़ती है और नेक्स्ट के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट्स. और जहाँ तक रही बात ये बाकी एलिमेंट्स की, ये मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, रिमेंबर दे एग्जिस्ट एज नेटिव. सो दे एग्जिस्ट एज नेटिव. आई मीन टू से मर्करी ही होता है, सिल्वर ही होता है, गोल्ड ही होता है और प्लैटिनम ही होता है. वैसे निकालें एंड एंजॉय. ग्रेट. इसलिए हमारे सिलेबस में एक इस वाले पार्ट से एग्जांपल है, दैट इज एल्यूमिना. एक इस वाले पार्ट से एग्जांपल है एंड दैट इज Fe2O3. तो लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फर्स्ट. ओके, सो देयर वी गो with extraction of metals. Extraction of aluminium आपको पढ़ा के आ चुका हूँ, इसलिए I won't be repeating it. Extraction of aluminium we learnt in the electrolysis chapter. तो उस चैप्टर में we learnt कि aluminium किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है. Al2O3 से हम उसको मेल्ट करते थे, फिर रिमेंबर, और हम aluminium एक्सट्रैक्ट कर लेते थे. But now yes, that is extraction of iron, which we have to learn first in this case. So it is extraction of iron. Remember, the raw materials which are used in this are, एक तो इसकी ore. Ore is Fe2O3. It's called as hematite. We'll have to use actually limestone. It's calcium carbonate. We'll have to use coke. It's carbon. So basically that is the solid reducing agent we have in its extraction. So हम आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए ये रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं बेसिकली, राइट. So we have the ore, we have limestone, we have coke. And this extraction is done in a special apparatus which is called as blast furnace. हम इसको blast furnace में करते हैं, right? It's a very expensive apparatus actually, ठीक है, और इसकी running cost बहुत ज़्यादा होती है.
इसको हम चलाते रहते हैं 2-3 साल तक, जब तक हमने इसकी सर्विसिंग नहीं करनी होती तब तक ये चलता रहता है। लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल्दो महंगा है और थोड़ी रनिंग कॉस्ट भी है, बट स्टिल आयरन प्रोड्यूस इज चीपर। तो वन ऑफ द रीजंस कैन बी कि हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओपन कास्ट माइनिंग से। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ओपन कास्ट माइनिंग इज़ अ चीप प्रोसेस, तो हम आयरन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे कुछ कॉस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। इस वजह से आयरन मार्केट में इतना चीप मिल जाता है, बट देन स्टिल फॉर सम पीपल इट्स एक्सपेंसिव। लेट्स सी ब्लास्ट फर्नेस। Alright guys, now this is blast furnace. So you can see iron ore, carbon and limestone, they are the raw materials which are added, right? और यहाँ से ये basically hot air है, ठीक है। This is the hot air, this is the hot air which will start the reaction. Hot air यहाँ से pump in होती है, ठीक है, और वो reaction start करती है। और कोई अगर वेस्ट गैसेस निकली तो हम वेस्ट बाहर से निकाल देते हैं, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कि आयरन इज मोर डेंस देन स्लैग, ठीक है। नाउ हाउ दिस स्टोरी हैपन्स, तो इट गोज लाइक दिस, शैल वी सी, ठीक है। तो ऑब्जर्व नाउ, व्हेन यू add raw materials and you pass hot air through it, right, what happened, that heat energy is valuable. It is not important कि हम उसको वेस्ट करें। तो जो कोक है essentially it's impure carbon, right? जैसे अब इसमें ऐड करते हैं, it burns an oxygen. So the first reaction happens is carbon reacts with oxygen and forms carbon dioxide. This reaction is redox, of course, right? The reaction is too much exothermic that the temperature rises to like 1800 degrees Celsius. It's strongly exothermic, and in this presence of heat, and excess carbon is there. This carbon excess reacts with CO2 and forms CO. It's again redox. By the way, this CO, sorry. So by the way, this CO is actually your gaseous reducing agent in the blast furnace. अगर हम आपसे पूछें सॉलिड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो वो कार्बन है। तो कार्बन इज योर सॉलिड रिड्यूसिंग एजेंट। और गैसियस कौन है, दैट इज CO. इट्स द गैसियस रिड्यूसिंग एजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। जैसे CO बनती है, इट्स द मेन रिड्यूसिंग एजेंट इन द फर्नेस। नाउ दिस इन द हॉटर पार्ट्स ऑफ द फर्नेस, ये जो CO है, इट नाउ रिड्यूसेस Fe2O3 which was hematite, the iron ore. The CO reacts with Fe2O3 and gives you Fe plus CO2. I must tell you, it's again redox. Right? Balance कर लेते हैं. So it's 3 CO. I think it's 2 Fe. I think it's 3 CO2. This iron produced is liquid because अंदर बहुत heat है. Iron molten state में निकला. Notice that at these temperatures, the other product of reaction is CO, not CO2. राइट। सो बेसिकली होता ये है कि अगर आपने CO यूज़ किया है तो वी ऑब्जर्व CO2 फॉर्मेशन। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कार्बन को रिएक्ट करा दे Fe2O3 के साथ, सो यू कैन सी इट्स 2 Fe प्लस यू कैन से 3 CO, और आप बैलेंस कर लें। If a student does like this, it's fine. I can't say it's wrong, right? But then the products are different. अगर आपने CO यूज़ किया है तो फिर CO2 निकालना है बाहर। अगर C यूज़ किया है तो फिर CO निकालना है बाहर। बस ये आपने ध्यान रखना है। Otherwise, what is preferable? So if you ask me, so what is preferable? So preferable is, can you write this reaction? That's perfect, because it's the main reaction occurring inside the blast furnace. अब इशू आ गया कि हमने लाइमस्टोन क्यों ऐड किया था, फंक्शनल लाइमस्टोन क्या था। आई मस्ट टेल यू, आयरन ओर इजंट एब्सोल्युटली प्योर Fe2O3. I should make you clear. It also contains an assortment of rocky material. Sand, बहुत बड़ी इम्प्योरिटी है इसके अंदर, ठीक है। अब वो सैंड रिमूव करना है तो आपको कैल्शियम कार्बन यूज़ करना पड़ेगा। अब कैल्शियम कार्बन हम यूज़ कर रहे हैं या हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं,
तो limestone, this limestone, it is used to remove impurities like sand. लेकिन इतनी अंदर हीट है ब्लास्ट फर्नेस में, पहले कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज करता है, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दिस इज थर्मल डीकम्पोजिशन, ये रिडॉक्स नहीं है. और जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, वो जो कि बेसिक है, इट्स मेटल ऑक्साइड, वो रिएक्ट करता है सैंड से, सिलिका जो कि एसिडिक है. ना दिस इज बेसिक, दिस इज एसिडिक एंड दिस फॉर्म सॉल्ट कैल्शियम सिलिकेट. ये भी चूंकि अंदर बहुत हीट है तो ये लिक्विड फॉर्म में निकलता है, इसको आप स्लैग कहते हैं. नॉर्मली इट्स कैल्शियम सिलिकेट, ये सॉल्ट है. यू कैन से दिस रिएक्शन इज मोर लाइक अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन and then it can be tapped off from time to time as slag. यही slag is actually used in road making. याद रखें यहाँ से slag, और हमने पढ़ा था experimental techniques में, जब हम alkanes की जो crude oil की fraction distillation करते हैं, वहाँ से bitumen निकलता है, तो वहाँ से bitumen, यहाँ से slag, तो it is used to actually for road surfacing. Right? So it is used for road surfacing. Great. So that's how we can say iron is extracted. आपने देखा कि हमने CO यूज़ किया, यानी कि a simple gaseous reducing agent is used, but not a need of electrolysis, which was actually required for the extraction of aluminum from Al2O3. Okay? Clear? Let's move on. So guys, this iron which is extracted from blast furnace is actually the cast iron. It contains maximum like 4% carbon. Sort of steel ही है आप कह लें, ठीक है? But it's cast iron. It's very runny when it is molten. It does not shrink much when it solidifies. So it is therefore ideal for making castings, you can say, right? But it's very impure. It's 4% carbon है, और यही carbon इसको बहुत हार्ड कर देता है, बट ऑल्सो एट द वेरी सेम टाइम इट्स ब्रिटल. इट्स हार्ड, वेरी हार्ड, बट इट्स ब्रिटल. जितना कार्बन कंटेंट होगा उतना हार्ड हो जाएगा सॉलिडिफाई होके, उतना ब्रिटल भी हो जाएगा. अब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो आपको टूट जाएगा. आर गेटिंग द पॉइंट? इट विल शैटर, इट विल नॉट बेंड. इस पर डेंट नहीं पड़ेगा. मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, कास्ट आयरन टूट जाएगा, राइट? हाँ, जितना आप कार्बन कंटेंट लो करते रहेंगे उतनी जो ब्रिटलनेस है वो कम होती रहेगी. आप हिट करेंगे तो मेरे हाथ से उसके ऊपर डेंट पड़ जाएगा. ठीक, लाइक फॉर एग्जांपल कि गाड़ियों की बॉडी होती है, जब इस पर हिट करते हैं तो उस पर डेंट पड़ता है. मतलब है कि वो इतने आप ब्रिटल नहीं है, isn't it? So guys, basically most of the molten iron from blast furnace is used to make steel, and we have so many types of steel. We have mild carbon steel, low carbon steel, high carbon steel. But generally, let's see the steel making process. Right? इसके लिए we use a basic oxygen process. ज़रा एक मोमेंट के लिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो ये आयरन निकाला आपने ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हैं. इसमें कार्बन भी है, सल्फर भी है, ये मेन इम्प्योरिटीज़ हैं. और भी होती हैं सिलिकॉन, फॉस्फोरस, लेकिन चले हम मोस्टली रिमूव कर लेते हैं. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट मेनली इट्स कार्बन एंड सल्फर. ठीक है, व्हाट वी डू इज हम इसके अंदर मैग्नीशियम पाउडर डाल देते हैं. जैसे ही हम मैग्नीशियम पाउडर डालते हैं, राइट, जो हम इसको ब्लो करते हैं मोल्टन आयरन से, ठीक है, मैग्नीशियम पाउडर इज ब्लोन थ्रू
मोल्टन आयरन। तो क्या होता है, वो मैग्नीशियम जो है वो सल्फर से रिएक्ट करके इट फॉर्म्स मैग्नीशियम सल्फाइड का स्लैग बन जाता है। वो स्लैग उसकी सरफेस पे आता है और आप उसकी सरफेस के ऊपर से स्लैग को रिमूव कर लेते हैं। ऑलराइट, ये तो हो गया सल्फर रिमूव। अब बात आ गई कार्बन पे, हाउ टू रिमूव कार्बन। Now what we do is oxygen is blown through this mixture, right? और फिर जो कार्बन है वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से एंड फॉर्म CO गैस। चलिए फ़ायदा ये है कि ये गैस है, MgS वो सॉलिड, उसका स्लैग बन जाता है, और CO इज अ गैस, तो ये वैसे स्केप कर जाती है, ठीक है। एंड यू आर लेफ्ट विद आयरन ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ कार्बन यू वांट, राइट। हम ऑक्सीजन इस तरह गुजारते हैं कि उसमें कुछ कार्बन रह भी जाता है कि हम उसको स्टील भी कह सकें कि स्टील क्या है, स्टील एक एलॉय है आयरन और कार्बन का। ट्रू दैट, ओके। सो गाइस, हियर यू सी वी हैव अ माइल्ड कार्बन स्टील, वी हैव स्टेनलेस स्टील। माइल्ड कार्बन स्टील में 1% कार्बन की राउंड होती है, ठीक है। इट्स मैलिएबल क्योंकि कार्बन कंटेंट कम है, चीप भी है, कार बॉडीज है, मशीनरी में यूज होती है। स्टेनलेस स्टील इज़ लाइक एक्सपेंसिव, इसके बाद क्रोमियम की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, क्रोमियम निकल की, राइट। वी हैव टूल स्टील एज वेल, मैंगनीज स्टील भी होता है, टंगस्टन स्टील भी होता है। चलिए वो हम इतनी बातें नहीं करते इस लेवल के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट स्टेनलेस स्टील, राइट। इट्स यूज्ड फॉर कटलरी एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस तरह हम स्टील को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देन ज़रा कुछ बातें कर लेते हैं रिसाइकलिंग की भी। So basically, why do we actually prefer recycling of metals? क्यों prefer करेंगे हम recycling आयरन की, ठीक है। Why? Let's talk verbal. Let's have some viewpoint. Just think out of the box. I think why recycling of iron should be done. I think it'll be saving raw materials and energy by not having to first extract iron from the ore. I think it will avoid the pollution problems in the extraction of iron. और फिर आई थिंक जो थर्ड पॉइंट, मेरे ख्याल से जो आपने आयरन यूज़ नहीं हुआ, राइट, फिर आपने उसको डंप करना होगा। जब आपको मशीनरी में अगर कोई शीट काटते हैं और आयरन जो यूज़ नहीं हो रहा, स्क्रैप जा रहा है बेसिकली, राइट, तो वो जो स्क्रैप है बेसिकली आप उसको करेंगे, डंप करेंगे। और फिर एनर्जी पोल्यूशन कॉस्ट्स in collecting and transporting the recycled iron to the steel works, right? I think they're very important things in which we always prefer that recycling of iron should be done, ठीक है। recycling करेंगे तो एनर्जी भी सेव करेंगे, रॉ मटेरियल भी सेव करेंगे, जो पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अवॉइड करेंगे, जो आपने डंपिंग करनी है आप उसको भी अवॉइड कर देंगे, और जो एनर्जी पोल्यूशन कॉस्ट्स आएंगी in collecting and transporting, ठीक है, iron to the steel works, वो भी कम हो जाएंगी। So I think such things really matter. This was extraction of metals. We learned aluminium in the electrolysis chapter. We learned iron now. Let's move on. So guys, let's see displacement reaction of metals. Just for the sake, I hope you know that the more reactive metals can easily displace less reactive metals from their salt solutions, oxides, etc. For example, if I place solid zinc in a solution of aqueous copper sulfate, the zinc will displace copper, right? And that copper will actually precipitate out as a pink solid. राइट, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल आयन को, अब चाहे उसका सॉल्ट हो मेरे पास या उसका ऑक्साइड हो मेरे पास, वॉट एवर, एंड दैट विल शो द रिएक्शन। इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ redox. Now the more reactive metal displaces less reactive metal ion. Example मैंने बोली, लिख लेते हैं कि zinc reacts with aqueous copper sulfate solution. Now that is blue. Now that gives you zinc sulfate aqueous
and copper solid. So मेरे ख्याल से blue solution will fade and we can observe a pink brown solid of copper, isn't it? और यानी कि यहाँ पे जिंक जो ग्रे सॉलिड है वो खत्म हो जाएगा और वहाँ पे कॉपर सॉलिड अपीयर कर जाएगा. दिस शोज दैट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज हैपेंड. और मेरे ख्याल से ये वाला जो रिएक्शन है इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. और हम अननोन मेटल्स भी फाइंड कर सकते हैं इस चीज से. इज दैट सो नॉट? अभी विल डू द क्वेश्चन एज वेल, यू विल सी इट. सो गाइस, वी कैन ऑल्सो हैव अ थर्मिट रिएक्शन, राइट, जो हम करते हैं ये रेलवे लाइंस के ऊपर. थर्मिट रिएक्शन भी इसकी एग्जांपल है. अगर रेलवे लाइन टूट जाए तो जहाँ पे टूटती है वहाँ पे हम असल में मिक्सचर डालते हैं एल्यूमिनियम का और Fe2O3 का. लेकिन इस रिएक्शन की बहुत हाई एक्टिवेशन है तो हम Mg बर्न करते हैं, Mg स्ट्रिप, और Mg बर्न करके Mg रिबन जो है उसके अंदर डाल देते हैं. फिर ये दोनों मेल्ट करते हैं, रिएक्शन शुरू होता है. रिएक्शन शुरू होने के बाद इतना रिएक्शन एक्सथर्मिक है कि Al2O3 और आयरन बनता है, तो आयरन प्रोड्यूसेस लिक्विड. द रिएक्शन इज एक्सथर्मिक नेचर. दिस आयरन फिल्स आउट दैट गैप, ऑल्दो उसमें Al2O3 भी होता है तो गैप फिल आउट जाता है, इट सॉलिडिफाइज और फिर वो रेलवे लाइन फिर मेंटेन हो जाती है. आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, परफेक्ट redox, where a more reactive metal displaces less reactive metal from its oxide. Let's see some questions. So guys, here's a question. जरा read कर लें. So basically a metal is dipped in a metal nitrate solution, and yes indicate the reaction has happened, no means no reaction. अब गौर करें, जो कॉपर है ना उसने टिन से रिएक्ट किया, ना Mg से, ना जिंक आयन से, इसका मतलब कॉपर इन सबसे लेस रिएक्टिव है. जौन सा मेटल जिस सोल्यूशन में डिप करेंगे और रिएक्शन अगर अकर करके, तो मतलब है कि वो मेटल उस मेटल आयन से मोर रिएक्टिव है. आई थिंक इट मेक्स सेंस. एज यू कैन सी, जो टिन ने रिएक्ट किया कॉपर से, मतलब है टिन कॉपर से मोर रिएक्टिव है, लेकिन Mg और जिंक से नहीं है. Mg ने सबसे रिएक्ट कर गया तो Mg इज आई थिंक मोस्ट रिएक्टिव, और जिंक रिएक्ट किया कॉपर से और टिन से बट नॉट Mg. मतलब है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड टिन बट नॉट Mg, isn't it? Now it says part A, describe what the student observes when zinc is placed into aqueous copper nitrate. Start thinking. Okay, I think it's 2 marks. One, we can say a pink brown solid is observed. कि जब जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर आयंस को तो कॉपर देगा, कॉपर इज पिंक ब्राउन. And then I think copper nitrate is like blue solution, copper ions. So we can say solution becomes pale blue, or solution turns to colorless from blue, या blue solution fades. So you can say blue solution fades. Use experimental results to reduce the order of reactivity of these 4 metals. I think most reactive will be magnesium, क्योंकि वो सबसे रिएक्ट किया. फिर जिंक, then tin, and finally copper, क्योंकि कॉपर किसी से रिएक्ट नहीं किया. Is that so? देखे ना, Mg सबसे रिएक्ट कर गया, मतलब है कि Mg इज मोस्ट रिएक्टिव, और आई थिंक कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, किसी रिएक्ट नहीं किया. सो दैट्स द शॉर्ट. ट्रू. Part 2, explain how the results support this order of reactivity. Please start off. तो आई थिंक ये लिखना ना कि मैग्नीशियम एक्चुअली डिस्प्लेसेस ऑल मेटल आयंस. ठीक है,
तो magnesium displaces all metal ions, तो ये most reactive हो गया. So copper reacts with none, second mark हो गया. और how did you come to know कि zinc is less reactive than Mg but more than other? तो zinc displaces both copper and tin but not magnesium, isn't it? You have to give all the three statements to score 2 marks, right? If you miss out one statement, you'll score 1. So all three statements need to be written to score 2 marks max. Don't please forget it. Okay, let's move on. Now that's the crucial part. Please start thinking. I'm giving you 3 to 4 minutes to ponder. It starts. And please stay focused, right? And please write it. And then please check it how I write it. And then give yourselves marks.
So guys, everyone, let's stop. Let's have an idea first कि होना क्या है. So you are reacting an acid with a metal. 4 metals आपके पास और हर दफ़ा आप हर metal को एक acid से react कराएंगे. Of course, acid should be same for each experiment, right? Acid का volume, acid की concentration should be same. और I think mass और size जो आप दे रहे हैं metal का वो भी same होना चाहिए हर experiment में. ठीक, क्योंकि उसने कहा है कि बताना है कि कौन से आप वेरिएबल्स कांस्टेंट रखेंगे, मेजरमेंट्स कौन सी लेंगे आप. तो आई थिंक आप एसिड का इनिशियल टेम्परेचर लेंगे, फिर मेटल ऐड करने के बाद हाईएस्ट टेम्परेचर लेंगे और डेल्टा टी निकाल लेंगे. और हाउ वुड यू रिड्यूस कि विच वन इज मोर रिएक्टिव? जिसका हाईएस्ट डेल्टा टी आएगा वो आंसर होगा, इजंट इट? सो बिगेस्ट चेंज इन टेम्परेचर मीन्स हाईएस्ट रिएक्टिविटी, स्मॉलेस्ट चेंज इन टेम्परेचर मीन्स लोएस्ट रिएक्टिविटी. Now how do you go about it? Let's see. So guys, here you go. So basically each metal, same size and same mass, is reactive with an acid, same constant, same volume in a container. Experiment start होने से पहले आपने उसका initial temperature नोट किया, ख़त्म होने के बाद reaction आपने उसका final temperature नोट किया और delta T आपने measure कर लिया. जितना टेम्परेचर चेंज ज़्यादा आएगा उतना रिएक्टिव मेटल होगा. तो मार्क्स किस चीज़ के हैं? क्या आपने बताया कि हम सेम साइज, सेम मास, सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेम वॉल्यूम ले रहे हैं एसिड का और हम इनको रिएक्ट करा रहे हैं एक कंटेनर में. आपने इनिशियल टेम्परेचर नोट किया, आपने फाइनल टेम्परेचर नोट किया और ग्रेटर द टेम्परेचर चेंज मोर रिएक्टिव द मेटल एंड इसको 5 मार्क्स. गो थ्रू कर ले एक मरतबा. सो गाइज, इससे मतलब है कि मेटल की रिएक्टिविटी आप उनको आपसे डिप करके फाइंड कर लें, आप उसको एसिड में डिप करें और डेल्टा टी फाइंड कर लें. एनी मेथड कैन बी यूटिलाइज्ड टू फाइंड आउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. परफेक्ट. This lecture will be available on YouTube for a certain while. You can go and have a recap through it, right? I hope you all liked it and I hope that you're enjoying it. Let's work harder and nail the examinations in October, November. Again, please make sure that in this time period, you're actually focused on your O-level IGCSE examinations, right? And after your O-level and IGCSEs end in October, November, of course, you start off with A1. Please not actually before that. You have A1 शुरू करें and then we'll rock and roll, inshallah. This was Happy Learning. Thank you.